Teachers and parents, everyone. Now we are back here with the introduction of sound. यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो साउंड्स हैं अब हम इनको बहुत छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए हैं अर्ली ईयर्स में प्ले ग्रुप के लेवल के ऊपर। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि टीचर्स या पॉलिसी मेकर्स जो हैं, स्कूल्स के जो करिकुलम डिज़ाइनर्स हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि इन साउंड्स को स्किप कर दिया जाए, इस तरह पर इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए। तो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, अगर होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्राई करें, इंट्रोड्यूस करवाएं, हमारी लेसन्स को, मेथडोलॉजी को यूज़ करें और इसके बाद मुझे अपना फ़ीडबैक भी दें। यकीनन आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत से लोगों के फ़ीडबैक्स मेरे पास आते हैं और विदाउट एनी स्कूलिंग उन्होंने जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई है साउंड। ना सिर्फ बच्चों को वोकेबलरी आती है, एक्शंस आते हैं, बल्कि बच्चे उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं शेप्स को। So we will discuss sound in the environment, introduction of the new sound, story and action, letter formation, sounding and at the end jolly song. यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी साउंड है जो हमें बिगनिंग में नहीं मिल रही है, ये साउंड हमें मिडल में मिलेगी या एंड में मिलेगी। क्योंकि हम बच्चों को पहले से ही ट्रेन कर चुके हैं कि साउंड कैन कम इन द बिगनिंग, कैन कम इन द मिडल, कैन कम एट द एंड, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ वहीं पर आती है जहाँ पर टीचर जो है जॉली फोनिक्स की ट्रू मेथडोलॉजी को जो है वो फोकस नहीं करती है, बल्कि वो इस पर आ जाती हैं कि हम सिर्फ बिगनिंग साउंड और 26 लेटर्स करवा दें, जिसकी वजह से बच्चों में जो वीकनेस आती है वो प्रॉब्लम आगे जाकर उनको ब्लेंडिंग और रीडिंग में बहुत ज़्यादा फील होती है। So you can collect these objects for your vocabulary basket at home or in the school: string, tang, ring, king, picture or the flashcard, ringtone. You can put your send phone in the vocabulary basket and show it to the students. Okay, introduction of the letter sound. Now we are going to tell the students that these two letters are making one sound. They have made friends. ये तो दोस्त बन गए हैं। g साउंड, और आप इनको नीचे इनके लाइन लगा सकती हैं, इनको ज्वाइन कर सकती हैं ताकि बच्चे जो हैं इनको एक साउंड समझें और इन दोनों को अलग-अलग प्रोनाउंस ना करें। Strong. Okay, now this is the time for the story. Leong is watching weightlifting and he is also trying to do the same. Look, you can talk about the Chinese names with ending with ng sound, and you can discuss the things over here like this: string, rings, and these are the ping pong balls, and this is weightlifting: strong, long. Okay, so it was the sound of the day, ng. In both of these two Strong. vocabularies, in both of these two vocabularies, sound is at the end. This is the time for the action. Say the sound, do the action, pretend to be a weightlifter lifting heavy weights. Strong. Okay, now this is the time of letter formation. You can see this video clip that the sounds are joined over here. Start from the dot, come down, go up, round and down, then again join with g, go till the dot, again come back, down, make kh, go up and down. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को अपनी फिंगर को या अपनी पेंसिल को बैक मूवमेंट करने में आती है, लेकिन अगर टीचर्स उनको अप एंड डाउन की प्रैक्टिस एक्टिविटी करवा लेती हैं तो वो इसको बैक मूवमेंट को हेजिटेंट फील नहीं करते। Okay, so you can put your finger on the tracing dot and match letters with picture. जब हमने साउंड इंट्रोड्यूस करवा दी उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप उसका लेटर, उसकी शेप इंट्रोड्यूस करवाना था, और फाइनली अब हम साउंड को उसकी शेप और ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर टंग में भी साउंड जो है वो एंड में आ रही है और लंग
maybe sound, and may area we don't have the sound in the beginning and we don't have the sound in the middle. Okay, sounding. Listen carefully. Is there any sound in the beginning, middle, or end? And where is the sound? Tell the position. Kangaroo sound is in the middle, and swing sound is at the end. What is in the nature? Spring season. You can talk about spring season, kangaroos, and flamingo. In the story time, you can tell them the story of the king of tiny thing, and they can look at the characters over here. This story is readily available on the web. You can tell them story each time they feel that they are learning a new story, they are listening to it and they are loving it. स्टोरीज़ एंड एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि बच्चे जो है इस साउंड के साथ एक रिलेशनशिप फील करते हैं. सो दे कैन डिस्कस देयर टंग कलर्स, दे कैन शो देयर टंग टू ईच अदर, and also they can measure the length. They can measure the length with the string. They can also measure the length with inches tape, and they can also measure the length with cubes. They can do this activity of measuring length. They would love it. In the worksheet time, they have to circle the sound, color in the picture, trace in the dot, learn the formation and do the tracing on the dots. These worksheets are available on our course section, and also you can book your order through email or WhatsApp. So we are at the group 5 sounds, and you can also look for these things and play I Spy with my little eye with the children. String, tang, honey wings, swing, and ring the bell. Sometimes you are unable to find things starting with a certain sound, but you can always look for if these sounds are coming in the beginning or in the middle or at the end. Name, a Chinese name, thing, tang, place, bird, animal. I was unable to find anything with sound in the middle. So if you know any sound, you can discuss. Strong King Kong with the ring sang a long song on the strong string swing. Wow. So you can make your own as well. What else? King role play, talk about King Kong, talk about Mr. Strong. You can watch it on the YouTube as well. Kangaroos, Ken Cafe. Ping pong, you can play ping pong, or even you can make the ping pong rackets. Ring the bell and try string art. So this is the vocabulary word banks. Again, for the introduction, identification of sound and its position. Bang, bring, cling. So the sound is in the end or in the middle, but sound is not there in the beginning. Okay, so this is the time for the song and poems. If you're strong and you know it, say If you're strong and you know it, say If you're strong and you know it and you really want to show it. If you're strong and you know it, say So do not forget to taste honey wings. Now this is important. You can see that there are lots of activities, games, stories for the reinforcement and identification of the sound. It may probably look odd in the beginning that how can you do this for very young children, age 2.5 or maybe 3 earlier than age 4. But it's very important and they would love it, they would enjoy it. There are lots of Jolly Funny products that are specifically designed for very young children, specifically my first letters and sounds and Jolly English. For more information, you can contact us on the following details.